Weil Felix test is done for the diagnosis of rickettsial disease. For rickettsial disease, serology is the mainstay of diagnosis. Serology for rickettsial disease can be non-specific, that is Weil Felix test, or specific test such as IFA and ELISA. So because Weil Felix test, it is a non-specific test, it should be confirmed by specific test like IFA and ELISA. Weil Felix test, it is a heterophile agglutination test, and the principle is on antigenic cross reactivity between the rickettsial antigen and proteus antigen. Weil Felix test is a type of heterophile agglutination test, and the principle is antigenic cross reactivity. But Weil Felix test, there's a disadvantage that it lacks high specificity and sensitivity. Weil Felix टेस्ट का सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी बहुत कम होता है, बट स्टिल इट इज़ यूज एज अ inexpensive diagnostic tool. The principle is of antigenic cross reactivity, that is rickettsia का जो alkali stable LPS antigen है, it is also shared by proteus strains like OX19, OX2 and OXK. तो rickettsia का alkali stable LPS is also shared by proteus OX19, OX2 and OXK, and thus the rickettsial antibodies are detected by using proteus antigens. So Weil Felix test, it is an example of tube agglutination test. Okay, we do the serial dilution of the patient's serum, and then they are treated with proteus vulgaris OX19 and OX2 and proteus mirabilis OXK. Weil Felix test is a tube agglutination test. It is a heterophile agglutination test. Serial dilution of the patient's serum is done, and then it is treated with proteus vulgaris OX19, OX2 and proteus mirabilis OX10. And Weil Felix test should be done only 5 to 7 days after the onset of fevers. It should be done only after 5 to 7 days after the onset of fever. Titer of 1 is to 80 is to be considered as a possible infection. ठीक है, तो रिकेट्सियल इन्फेक्शंस के काफ़ी टाइप होते हैं. रिकेट्सियल इन्फेक्शन कैन बी एपिडेमिक टाइफस और एंडेमिक टाइफस. इट कैन बी टिक्स बॉर्न स्पॉटेड फीवर और स्क्रब टाइफस. तो एपिडेमिक और एंडेमिक टाइफस में OX19 इंक्रीज़ होता है. एपिडेमिक और एंडेमिक टाइफस में OX19 एंटीजन के लिए जो एंटीबॉडी होता है वो इंक्रीज रहता है. टिक बॉर्न स्पॉटेड फीवर में OX2 और OX19 दोनों के लिए एंटीबॉडीज़ इंक्रीज रहता है, और स्क्रब टाइफस में OXK का एंटीबॉडी इंक्रीज रहता है. एपिडेमिक और एंडेमिक टाइफस में OX19, टिक बॉर्न स्पॉटेड फीवर में दोनों OX19 और OX2, और स्क्रब टाइफस में OXK का एंटीबॉडीज़ इंक्रीज रहता है. Weil Felix test is negative for rickettsial pox and Q fever. ठीक है, तो ये जो Weil Felix टेस्ट है इसका डिसएडवांटेज है कि it lacks high specificity and sensitivity, or it can come false positive also or false negative also. False positive can be in the presence of underlying proteus infection. Proteus infection के कारण false positive हो सकता है, और प्रोजोन फेनोमेना के कारण फॉल्स नेगेटिव हो सकता है. तो प्रोजोन फेनोमेना को अवॉइड करने के लिए पेशेंट के सीरम को सीरियली डाइल्यूट करते हैं. तो Weil Felix टेस्ट में फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है ड्यू टू अंडरलाइंग प्रोटियस इन्फेक्शन. फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है ड्यू टू प्रोटियस इन्फेक्शन. फॉल्स नेगेटिव हो सकता है ड्यू टू प्रोजोन फेनोमेना. And because Weil Felix is a non-specific serological test, it should always be confirmed by specific serological test like IFA, that is indirect immunofluorescence assay, and ELISA.
Specific antibody detection test for rickettsiosis is IFA and ELISA.